Very good morning, all of you. Class 10th. This is our first video, and our first class also. This is our first lesson. We are going to start our new chapter, that is electricity. Okay, this is our first chapter. Electricity is your first chapter in the physics. Electricity. If you are talking about electricity, then what comes in your mind? What comes in your mind? That is current. Okay. जब इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? एकदम से हमारे माइंड में आता है दैट इज द फ्लो ऑफ करंट. करंट के बारे में हम देखते हैं. So if you see, electricity is very important in our daily life. Without electricity, you cannot think about your life nowadays. Because everything, with whatever the things we use in our life, that is, in each and every part of our life, electricity is being used. Okay, whether it's your mobile, whether that is any electrical appliances, electronic appliances. Okay, so it is widely used all over the world. Okay, not in your own home also, but it is also used outside also, means like in the hospitals, industries, even on the road. Okay, so it is used everywhere. So if you are talking about the electricity, so one thing that comes to our mind, that is the current. It is the current. Current. What is current? Okay, what comes to mind? That is, what is current? Current is what? The rate of flow of electron. Rate of flow of electron. Rate of flow of electron is called electron. Electron is termed current. Or you can say that in any of a conductor, when the charge flow, okay, in a given time, in a given unit time, that is also called current. So by the definition of this, if you rewrite it in the form of the mathematical form, then we can write I equals to Q upon T. I is the symbol for the current. Current hota hai, isko hum I se denote by capital X. Okay. Now this is charge, this is your time. That means what? Current equals to, it means what? Current equals to charge upon time. Okay, charge upon time. Charge upon time. Okay. Now SI unit of the charge. SI unit क्या होता है? SI unit of charge is what? Of charge is coulomb. क्या होता है? Coulomb. Unit of charge coulomb, जिसको हम कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं. Okay. And SI unit of the time is क्या होता है? Second. क्या कहते हैं उसको? Second. SI unit of the time is second, denoted by capital S. Okay. That means what? From these two, we use here. So I equals to what? I equals to Q upon T. Q का क्या होता है? Coulomb. Suppose I take 1 coulomb here. Okay, 1 coulomb. और यहाँ लेता हूँ मैं 1 second. That means what? 1 coulomb per second. So it means what? 1 coulomb per second is what? That is equals to 1 ampere. So 1 coulomb per second equals to 1 ampere. Okay, 1 ampere. So ये जो ampere है, ये किसका यूनिट है? Is the unit of current. So current का यूनिट क्या हो गया? That is ampere. Ampere is the unit of the current. Okay. Now, the question asks like this. इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि define 1 ampere. क्वेश्चन क्या बनता है? Define 1 ampere. Define 1 ampere. 1 ampere. ये क्वेश्चन बनता है. Define 1 ampere. Okay. Define 1 ampere. तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? Current is said to be 1 ampere
ampere when 1 coulomb of charge flow across any conductor in 1 second. Okay, so it is a current definition of 1 ampere. Current is said to be 1 ampere when a coulomb of charge flow across any conductor in 1 second. That is called 1 ampere. Okay. The question is like this. Sometimes it is also asked that एक क्वेश्चन और बनता है कि how many electrons are there in 1 coulomb. एक coulomb के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है. ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. और इस फॉर्मूले के ऊपर एक फॉर्मूला आता है, इस क्वांटाइजेशन चार्ज जो प्रॉपर्टी पे फॉर्मूला है, दैट इज Q equals to NE, right? Where is what is the charge of electron, N is the number of electrons, and Q is what? It is the charge. Okay, means the total charge of that body. How many electrons are there? It is Q. See, so what is given to us? हमें क्या दिया यहाँ पे? हमें Q दे रखा है. Q की वैल्यू कितने रखी है? 1 कूलम. ओके. E, तो E का हमको पता होना चाहिए कि E का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये होता है. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है N. ओके, N we have to find. So with this formula we can write N equals to Q upon E. So Q कितना आपका? Q आपका है 1 कूलम. ओके, और how many charge are there in 1 electron? इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. राइट. सो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 into 10 की पावर 18. So how many electrons are there in 1 coulomb? This much. 6 into 10 की power 18 coulomb. This much electrons are present in 1 coulomb. So 1 coulomb is a big number, right? In terms of electron, you can say it is very big number. Okay. So this is about this one, and because it's a 1 ampere is a big unit, so its small unit is also named like this. इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि माइक्रो एम्पियर, सब लिखते हैं माइक्रो एम्पियर. कई बार ऐसी ये यूनिट भी आती है, बिकॉज एम्पियर इज अ बिग यूनिट. सो इन स्मॉल यूनिट वी राइट इट लाइक दिस माइक्रो. माइक्रो सिंबल ऐसे लिखते हैं, और ये माइक्रो एम्पियर दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10 की पावर minus 6 एम्पियर. ओके, इसी तरह से हम लिखते हैं मिली एम्पियर. तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल m एंड कैपिटल A. मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. ओके, सो इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द करंट, दिस वन अबाउट दैट इज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड व्हाट आर द सिंबल्स, जो भी सिंबल यूज करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स होते हैं उसके ऊपर व्हाट टाइप ऑफ द सिंबल्स दैट वी यूज, उसके सिंबल्स हम उसको बनाएंगे. फिर हम आएंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर. ओके, थैंक यू सो मच.